पिछली क्लास में हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ जेड एंड एम निकाल लिए थे। इसके बाद हम लोग चाहते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में कितनी है। तो ये निश्चित जानते हैं कि एनर्जी दो प्रकार की हैं। इनका sum of these two energies will be equal to total energy of electron in nth orbit. Here this is kinetic energy in nth orbit, and here this is potential energy in nth orbit. हम लोग जानते हैं पिछले क्लास में कि since Kn kinetic energy of electron in nth orbit m e to the power 4 upon 8 epsilon naught square h square z square by n square equal to 13.6 z square by n square electron volt. Potential energy negative minus me to the power 4 upon 4 epsilon naught square h square z square by n square, where n is quantum number, equal to 27.2 z square by n square electron volt. If we put these two values in this equation, then we will get a total energy of electron in nth orbit. Kn m e to the power 4 by 8 epsilon naught square h square z square by n square. Here this is negative, minus m e to the power 4 by 4 epsilon naught square h square into z square by n square. Okay, here this is 13.6 z square by n square minus 27.2 z square by n square. This is total energy of electron in nth orbit. हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो कि nth ऑर्बिट में है, उसके मोशन के कारण उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, उसके इंटरेक्शन के कारण जो इंटरेक्ट कर रहा है किसी न्यूक्लियस से, उसके कारण उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। इन दोनों का सम ये टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इन nth ऑर्बिट। तो En इक्वल टू दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, this is equal to here we can take common m e to the power 4, m e to the power 4 by 8 epsilon naught square h square. Here 1 by 8 minus 1 by 4 into z square by n square. Here this is 13.6 minus 27.2 z square by n square. और En is equal to minus me to the power 4 by 4 8 epsilon naught into h square into z square by n square, and this is equal to En equal to minus 13.6 z square by n square electron volt. By using
As these two equations, you can find a total energy of electron in nth orbit in any hydrogen-like atom, say singly ionized helium atom or doubly ionized lithium atom. For hydrogen atom, for H atom, Z equal to 1. Z equal to 1. It means En is equal to 1 by n square, and this is equal to minus 13.6 by n square electron volt. ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास है 20 नीट 2020 में, एकदम सीधा minus 13.6 by n square electron volt. This is the total energy of electron in nth orbit. From this equation, you can conclude that if n increases, then total energy will increase. पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था, जिसमें खुशबू जी ने हमसे बातचीत की थी, मैंने एक क्वेश्चन दिया था जो आईटी 15 में था, आईटी 2000 में था, हो सकता है मे बी कि ये क्वेश्चन 2025 मिनट में दे दे कि इफ एन इलेक्ट्रॉन is tangent from high energy orbit or to low energy orbit, then kinetic energy increases but potential energy decreases. ये आईटी का है, इसको जस्ट नीट उल्टा कर सकता है. If an electron goes from low energy orbit or to high energy orbit, then kinetic energy will decrease and potential energy will increase. From this equation, it is clear that magnitude of a total energy is equal to a kinetic energy. Is equal to kinetic energy. जो कि 18 में क्वेश्चन नीट ने किया था, 18 में क्वेश्चन नीट ने किया था कि the ratio of a kinetic energy to the potential energy, this is equal to 1. That is a Km ratio Un is equal to 1:-1. NEET UG 2020 18. Very simple, very simple. In 2025, या आपसे कह सकते हैं En by Un is equal to 1/2. That is En ratio Un is equal to 1:2. Or
UN equal to 2 En. En, UN, Kn by UN. Here this is equal to minus 1 by 2. That is Kn ratio UN equal to 1:-2। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। जब ये क्वेश्चन नीट कर सकता है तो ये क्वेश्चन नीट कर सकता है, ये क्वेश्चन नीट कर सकता है 2025 में। वेरी इजी, मे बी इन 2025, 2025। इसी क्वेश्चन को उन्होंने 22 में किया है, जिसमें उन्होंने ऑर्बिट को एक्साइटेड कहा है, जो अभी हम लोग करेंगे। यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में अगर एनर्जीज T1 और T2 हैं, then what will be the ratio of T1 and T2? T1 by T2. Very easy question. Very easy question. To remember, Kn by UN बराबर -1। एक और क्वेश्चन आपको मिला है, वो भी 22 में ही था, कि if kinetic energy of electron in nth orbit is 3.4 electron volt, then total energy and potential energy will be, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी -3.4, और इसका अगर दूना कर देंगे तो आ जाएगी क्या, पोटेंशियल एनर्जी। If total energy of an electron in an orbit is -3.4, then kinetic energy of electron in that orbit will be -3.4। क्या चाहते हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चंस, बड़े इजी क्वेश्चंस आते हैं, आपको ध्यान रखना है कि क्या कृष्ण पूछा है, तो रिमेंबर इट। मुझे आशा है कि आपको क्वेश्चन मिलेगा जो IIT का है, वो उल्टा करेंगे। ये फाइनल इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लो एनर्जी ऑर्बिट, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन will increase but potential energy will decrease. If an electron moves from low energy orbit to high energy orbit, then kinetic energy will decrease but potential energy will increase. कारण वैसे भी जानते हैं आप, जो ऑर्बिट नज़दीक है उसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे ऑर्बिट ऊपर जाएगा काइनेटिक घटेगी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि नेगेटिव घटेगा, एंड नेगेटिव इफ इट डिक्रीजेस देन पोटेंशियल विल आल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि -3 और -4, -3 बड़ा है, 0 एंड -4 0 बड़ा है, याद कर। और आपके सिलेबस में भी बहुत कम दिया उन्होंने, अगर सिलेबस को देखोगे तो एनर्जी लेवल्स उन्होंने कही हैं, रेडियस नहीं, वेलोसिटी नहीं, टोटल एनर्जी नहीं, केवल एनर्जी लेवल।
लेकिन हम लोग बहुत सारा काम कर लिए हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी तरीके का क्वेश्चन आपको मिल जाए, ध्यान ही रखना है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, रेशियोज क्या होंगे। किसी भी ऑर्बिट में जो काइनेटिक एनर्जी है उतना ही पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन निगेटिव नहीं, टोटल एनर्जी होगी लेकिन निगेटिव। देख रहे हो आप? अगर आपको पोटेंशियल दी गई है जितनी, उतना ही काइनेटिक एनर्जी होगी, केवल उसका मोड ले लेना है। अगर टोटल एनर्जी दी गई है, आपको पोटेंशियल निकालना है एनर्जी, तो उसका डबल कर देना है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव है दोनों। And here negative sign indicates that electron is bound to the nucleus. Electron is bound to the nucleus. Electron nucleus के साथ, और जितने भी बाइंडिंग, जितने भी एनर्जीज नेगेटिव हैं, उस सिस्टम बाउंडिंग अट्रैक्शन होता है। हमारी पूरे यूनिवर्स की एनर्जी निगेटिव है, किसी भी परिवार की एनर्जी निगेटिव है, किसी भी सैटेलाइट की एनर्जी निगेटिव है, जो -2 स्मॉल आर कहा है, स्मॉल आर की जगह आर प्लस कैपिटल आर प्लस एच है, जो इस साल क्वेश्चन आपको मिला है। ओके, तो अब हम लोग सिलेबस में आते हैं, एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स, आपने कहा है कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in nth orbit in hydrogen atom is En equal to minus 13.6 by n square electron. Energy levels are referred as energy states. Energy levels are referred as energy states. यानी एनर्जी स्टेट्स और एनर्जी लेवल्स दोनों सेम है, लेकिन एनसीईआरटी ने जो आपके सिलेबस में लिखा उन्होंने लेवल्स लिखा है। तो एनर्जी लेवल्स आर रिफर्ड एज energy states. Energy states. The energy state in which electron has minimum energy is called ground state. The energy state in which electron has a minimum energy is called ground state. And all other states are excited state. So if n equal to 1, then E1 equal to minus 13.6 electron volt. This is minimum energy of electron in first allowed Bohr orbit. Since this energy is minimum, hence it's called ground state.
at room temperature electron remains in ground state most of time. सारी के सारी समय मोस्ट ऑफ टाइम इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में रहा करता है. दिस इज द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट मिनिमम एनर्जी. If n equal to 2, then E2 equal to minus 3.4 electron volt, minus 3 electron volt. This is a first excited state. This is the energy of electron in a first excited state. First excited state. If n equal to 3, then E3 equal to minus 1.51 electron volt. This is the energy of electron in a second excited state. If n equal to 4, then E4 is equal to minus 0.85 electron volt. Third excited state. And if n equal to infinity, then E infinity equal to 0. It means if 13.6 electron volt energy is supplied to the electron, then electron will go out from attraction of a nucleus, भाग जाएगा, यानी एटम एनालाइज हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम. यही कारण है कि आप केमिस्ट्री में पढ़ाया करते हो कि 13.6 electron volt is ionization energy of hydrogen atom. Above this energy, electron is free. Because there is no interactions between electron and a nucleus. In gravitation, potential energy of a body on the surface of Earth is minus Gmn by R. If a body is projected from the surface of the Earth with kinetic energy equal to Gmn by R, then body will escape. Body ग्रेविटेशन फील्ड से पार हो जाएगी, and this is called escape velocity.
जो कि अर्थ के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। सब बातें एक है, केवल थोड़ा सा कहने में फर्क है। यहाँ इलेक्ट्रॉन है, अगर हाइड्रोजन को 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी सप्लाई कर दी जाए, देन इलेक्ट्रॉन विल बिकम फ्री हो जाएगा, एटम आयनाइज हो जाएगा, H+ बन जाएगा। ओके, तो these are the energies of electron in different orbit. Here, plus 3.4 is kinetic energy of electron in second orbit. Minus 6.8 a potential energy of electron in a second orbit, जो आपको 22 में क्वेश्चन मिला है। और एक और है T1 T2, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। मैंने उन्हें आपसे किया है कि व्हाट इज द रेशियो, T1 और T2 है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ T1 एंड T2। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। T1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, T2 second excited state. Here, since E is directly proportional to 1 by n square, 1 by n square. T1 by T2 in excitation, energy in first excited state, energy in second excited state. So here second means 3, 3 to power 2 by 2 to the power 2 equal to 9:4. That is T1 ratio T2 equal to 9:4. क्या चाहते हो भाई, क्या चाहते हो? फिजिक्स में बेकार है, फिजिक्स में बिल्कुल इजी वे में पढ़िए, सिंपल पढ़िए। जूलॉजी बॉटनी को ज़्यादा पढ़िए इफ यू वांट टू बिकम ए डॉक्टर। यहाँ बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, 2024 को देख लीजिए, 23 को देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। वेरी सिंपल क्वेश्चंस आपको मिला करते हैं, वेरी सिंपल। ओके, एनर्जी लेवल्स। Here this is E, total energy, and here level. N equal to 1, N equal to 1, minus 13.6 electron. This is first energy level, ground state. N equal to 2, minus 3.4 electron volt. This is energy of second states, second energy level, second orbit. N equal to 3 minus 1.51 electron volt. N equal to 4 minus 0.85 electron volt. N equal to 5 minus 0.454 electron volt. And if N equal to infinity, then this is 0.
ground state, first excited state, second excited state, third excited state, fourth excited state, and here the electron will become 40. If we supplied a 13.6 electron volt energy to the electron, then hydrogen atom will ionize. And 13.6 is electron volt is ionization energy of hydrogen atom. Okay. Now we will meet tomorrow.